I'm responsible for supporting the teams that design, build, and operate our test and launch sites across the country for both our Terran 1 and Terran R vehicles, including for operations on their stages, engines, and propulsion components. Together, we'll be guiding you through our first launch attempt today. Now, the purpose of Good Luck Have Fun is to test Terran 1's capabilities. This is the first launch, meaning that while we're aiming for Terran 1 to reach orbit, our primary focus is on gathering the data and learnings necessary to develop Terran R, our much larger, medium to heavy lift reusable launch vehicle. The lessons learned from this mission will also enable us to improve our software-driven approach to manufacturing. Today's launch includes many firsts. Terran 1 is the first 3D printed rocket, which is 85% 3D printed by mass, and is in a race to become the first Methalox propelled rocket to achieve orbit. If orbit is achieved, Relativity will also become the first venture-backed space company to have successfully reached orbit on its first flight. And it's worth noting that while Terran 1 will be capable of lifting 1,250 kilograms into low Earth orbit or LEO, today's launch does not have a customer payload. We do, however, have a memento on board, one that's quite unique to Relativity that we'll tell you a little bit more about later. Liftoff is currently scheduled approximately 56 minutes from now. This estimation may change as we work through our countdown. We'll keep you updated along the way. Today's launch window lasts for about 3 hours, giving us time to troubleshoot any issues. If any unforeseen issues arise during the countdown, we can pause the launch sequence if necessary. And with that, Arwa, what's the mission status update? Well, as you said, we're at T minus 55 minutes and counting. We just received confirmation that propellant load is wrapping up for both stages. The weather is trending in our favor. However, we're keeping an eye out for medium winds that are gusting at about 22 miles an hour. And there are a few scattered clouds, but conditions are currently within limits. So the range is green, the vehicle is healthy, and we're progressing well towards our scheduled launch time. This is so exciting. We're getting closer and closer. So Arwa will provide regular status updates over the course of the countdown. In the top left of your screen, you can find our countdown clock to help follow along in our pre-launch operations. And now, ahead of our terminal countdown, here are some other quick facts to bring you up to speed on Terran 1. This launch vehicle is a two-stage expendable rocket. It stands at 110 feet tall and is 7.5 feet in diameter. As far as we know, this is the largest metal 3D printed object to exist, much less attempt orbital flight. It is 85% 3D printed by mass, and there are 9 Aeon 1 engines on the first stage and a single Aeon vacuum engine on the second stage. All Aeon engines are, of course, 3D printed. Terran 1 and Terran R are both Methalox rockets. This means that they use a combination of liquid natural gas, predominantly composed of liquid methane, and liquid oxygen, hence Methalox. This propellant combination is becoming the choice for next-generation reusable vehicles, including our next rocket, Terran R. We believe it will also be easiest to eventually transition to methane on Mars. The important thing here is that Terran 1 will give us parallel learning for Terran R. And we'll dive deeper into Terran 1 and share updates on Terran R development over the course of the webcast. But in the meantime, Rochelle, let's talk a little bit about who we are as a company. We often get asked, what is Relativity Space? Well, we are a rocket company, and we put our customers first. We're building rockets designed to offer high performance and reliability while costing less to build and fly. And if that wasn't enough, we have the long-term vision for expanding the possibilities for the human experience by creating humanity's industrial base on Mars. And building large-scale metal 3D printers could make Relativity's mission possible, including early Martian settlements. We see 3D printing as an automation tool. It allows us to remove fixed tooling and really embrace software-driven manufacturing. Our first 3D printers were developed about 7 years ago, and since then, we've improved on speed, scale, and complexity across 4 generations of printers. We intentionally started with orbital rockets because we saw an incredible market opportunity in space.
and we believe they're among the most complex proofs of concept to develop this advanced manufacturing technology. There's also a natural incentive cycle between 3D printing and rockets. The lighter weight a 3D printed product is, the faster it is to build, and thus the cheaper it is. The desire to make a rocket lightweight is really to ultimately increase our payload capacity. This also means we can optimize for cost, build and iteration time, total part count, and reduce fixed tooling. Our Stargate printers were used to manufacture our Terran 1 vehicle, and we're currently expanding into a 1,000,000 square foot facility known as the Wormhole to allow us to continue the manufacturing of Terran R. This isn't only exciting for our internal teams, but it's also exciting for our customers. Terran 1 and Terran R have already been met with significant market interest. To date, Relativity has publicly announced nearly a dozen signed customers for commercial and U.S. government payloads. Some customers include OneWeb, Iridium, NASA, and the Defense Innovation Unit. Currently, Relativity's customer contracts amount to more than $1.65 billion. Relativity is a private venture-backed company. To date, we have raised over $1.3 billion in capital with our most recent $650 million Series E round. That's right. I do want to switch gears for a minute here. I think we'd be remiss not to take a moment to acknowledge that today is International Women's Day and to give a shout out to our hundreds of incredible female colleagues who are contributing to Relativity's mission. I am so proud to work alongside you all. Good luck, have fun is the maiden launch of our 3D printed Terran 1 rocket. Terran 1 is an orbital class rocket, and of course, reaching orbit would be a total home run. But truly, we are looking for some important base hits here today. Notably, a key objective for today's flight is largely about proving our hypothesis that 3D printing is a viable way to manufacture a rocket, and that it can successfully withstand the pressures of flight. Through robust ground testing, we're confident that we have a real shot at proving just that. And the more data that we collect from this first flight means that we'll have access to more insights, giving us confidence that we're able to execute on Terran R and help us solve all the hard problems that come with building a medium to heavy lift reusable rocket. As a business, we're following a Pathfinder product development approach. The Terran 1 that you see on the pad today has always been our Pathfinder. It was designed to be a development platform for Terran R, and it has served us exceedingly well to date in that capacity as we progress through printing and testing ahead of today's launch. Arwa, maybe let's dive deeper into what we might call a success for today's launch. Yeah, absolutely. Clearing the pad, getting out over the ocean, and passing the point of maximum dynamic pressure, or max Q, would be a big inflection point for today's launch. This is because it's the point where the structural loads on the vehicle are the highest, making it one of the most challenging phases of flight. This is the point in flight where we really want to prove much of what has already been proven on the ground. During acceptance testing, the vehicle withstood loads even beyond what we anticipate it will encounter during flight. So passing this milestone would effectively demonstrate that 3D printed rockets are structurally viable. If we make it even further to stage separation, we will have achieved a full first stage flight, and that'll be another big accomplishment from the team. From there, we'll attempt to light the second stage and get Terran 1 to orbit. So at this point,
I'll be honest, it'll take some restraint to keep us seated here. If the stages of flight were a video game, this is where I would start to feel like it's a bonus round unlock. And just as a reminder, since today is our first flight, for stage 2, we are targeting a 200 kilometer by 210 kilometer orbit, which is not a traditional orbital target. But that is our target today, given that this is our first launch and not a customer mission. That's right, and we have strict safety protocols in effect for today's flight and are closely coordinating with the FAA and Space Launch Delta 45. These protocols are, of course, standard for all launches and ensure that no one would be in harm's way if there were to be an anomaly. And as a reminder, there is no customer payload on this flight. Instead, to celebrate how far we've come, we've mounted our first ever metal 3D print from the first generation Stargate printer inside of Terran 1's nose cone. And while we're on the topic of setting expectations, we will also note that we are unsure how much of the second stage flight we will be able to share with you live. While we do have cameras on board, we will be prioritizing vehicle telemetry sensor data for this launch in order to maximize our learnings. And as a result, the video connection could be spotty. In the event that we do lose our video, we will do our best to keep you up to date as we receive telemetry. Now let's talk about the countdown overview. Well, the window for today's launch attempt opens at 1300 Eastern Time and lasts for 3 hours. The pad was cleared of all personnel at T-4 hours, followed by the start of propellant loading. Propellant loading is now wrapping up, as I mentioned, and we're currently going to continue topping off our tanks and conditioning our propellant after that. At approximately T-20 to T-15 minutes, the launch director will poll the launch teams to ensure that all subsystems, weather, and the range are go for terminal count. Terminal count will then be at T-minus 70 seconds, and it's when the vehicle's internal flight computer takes control of the countdown. Now, while we wait for T0, let's talk about the process that got us here. So again, Terran 1 is 85% 3D printed by mass. The items that are not 3D printed include rubber seals, computer chips, valves, and other similar items. Relativity sees 3D printing as an automation technology, and we believe that long-term 3D printing will rapidly democratize space. We've already been able to unlock rapid part count reduction and rapid design iteration, and we're still in the early days of what's achievable. Now, we use 2 classes of printers here, powder bed fusion, or PBF, and vertical wire arc additive manufacturing, or WAM. PBF is a process that uses a heat source, such as a laser, to sinter or fuse powder particles together in a layer-by-layer process. What you see on the table in front of me are a few sample PBF printed parts. These are not flight parts, but just examples for us to see today what kind of parts we could print using this technology. For PBF, we use this technology to print our Aeon engines. These are the 9 Aeon 1 engines on the first stage and the single Aeon vacuum engine on the second stage. PBF has allowed us to increase our reliability through lowering our part count. And on the other hand, our proprietary Stargate printers use WAM for printing the vehicle structure. The material we use is a proprietary metal alloy developed in-house. It begins in a wire spool, and that wire is then fed into a Stargate printer. It's then heated and cooled rapidly to form small beads that in succession create the vehicle structure layer by layer. That includes the Stage 1 and Stage 2 tanks that hold the propellant, their internal ribs, the common domes, and the nose cone. This is essentially what makes up the bulk of the visible part of the vehicle on the pad, except now it's painted white instead of the native silver that you see here. Now, I do want to mention that our Terran 1 was vertically printed using our 3rd generation printer, but our 4th generation printer will move horizontally to increase print sizes for our next vehicle, Terran R. But of course, the star of today's show is still Terran 1. That's right. Let's do a deeper dive into Terran 1 and walk through the architecture shown on the screen. Terran 1, as mentioned before, is 110 feet tall and 7.5 feet in diameter. Starting from the left-hand side of the diagram and at the bottom of the vehicle are 9 Aeon 1 engines. As mentioned before, these are printed using powder bed fusion.
technology. Each Aeon 1 engine has a thrust capability of about 23,000 pounds at sea level. In total, this gives us a max total liftoff thrust of more than 200,000 pounds. The Aeon 1 engine is designed with a gas generator cycle, and each of these engines also has thrust vector control actuators, or TVCAs, to gimbal the engines during flight. We have completed more than 2,000 engine hot fires and 10,000 seconds of runtime across 191 Aeon 1 hot fire tests. The Aeon 1 engines are attached to the vehicle through the thrust structure. This is what takes the load from the thrust coming from the engines. And above the thrust structure is the stage WAM printed tanks that Arwa just spoke about. These hold the liquid oxygen propellant on the top tank and the liquid natural gas on the bottom tank. The tanks are actually pressurized using an autogenous pressurization system during flight. We run propellant through heat exchangers mounted on the engines, which convert liquid propellant into a gaseous state, and this is piped back into the top of the tanks to maintain the required tank pressures. Above stage 1 is the WAM printed interstage, which holds the stage separation mechanisms. For stage separation, we use pneumatically actuated pushers. Above the interstage is stage 2, which has a single Aeon vacuum engine. This engine has a thrust capability of more than 25,000 pounds in vacuum and has the capability of multiple restarts. Stage 2 also has WAM printed tanks just like stage 1. And above stage 2 is the WAM printed nose cone. For future missions, this would be replaced with a fairing and also have a fairing separation system. We have no customer payload for today's launch since this is our first launch. The payload capacity of Terran 1 is 1,250 kilograms to low Earth orbit, or LEO, and 900 kilograms to sun synchronous orbit for our customer missions. All data from Terran 1 development will be fed into Terran R. But our Terran 1 rocket is only a part of the formula. We also have a historic launch location. That's right. We are launching today from historic Launch Complex 16 at Cape Canaveral Space Force Station. Between 1959 and 1988, this site supported a total of 141 launches. It was initially built for the Titan missile launches, and it was transferred to NASA for Gemini crew processing and static test firing of the Apollo service module's propulsion engine. The Air Force then used it from 1972 to 1988 for the Pershing missile launches. After that, the site sat abandoned, and Relativity then got the right of entry in 2019. In 2020, we initiated land clearing and construction. We built the whole site from scratch, and in less than 2 years, the team cleared, demoed, and built the pad to what you see here today. This includes the pad deck, the transporter erector, all the commodities and utilities, the office space, and of course the integration hangar. We conducted multiple hot fire tests after that and are here today to launch. Good luck, have fun. This will be the site's first launch in over 35 years. Now let's take a minute to visit our facilities across the country.
All right, and a quick status update here. We are just over T minus 36 minutes and counting. You may have seen a brief moment where the T clock said hold, but that was just a graphical error. We are still go as of now. Weather violations are tracking none. The medium gust winds at 22 miles an hour are still within range. The clouds are still within the limits. The range is green, and everything is go for our scheduled launch time. Now, while we wait, let me take a minute to explain a little about what you're seeing on the pad. The rocket rolls out of the hangar horizontally and is then lifted vertically by the transporter erector. That is the black truss structure you see behind the rocket. The 4 large towers surrounding the pad make up our lightning protection system. They protect the vehicle from any direct lightning strikes. Inside of those, we have 4 small black posts around the pad called rainbirds. They're used for acoustic mitigation for the rocket and do so by covering the pad with water to dampen the reflected acoustics. The small flame that you see there at the bottom right of your screen is the flare stack. It burns off flammable gases from propellant loading, venting operations, and priming of the engine igniters. It's a little harder to see, but the small slide-looking structure beneath the vehicle, there it is our water-cooled flame diverter. It's used to mitigate the heat from lighting the engines, and it directs the exhaust plumes away from the vehicle. You'll also be able to see what looks to be 3 different levels under the rocket. The largest and lowest level is the pad deck, and directly above it is the launch table. This is where the launch mount pins to the pad and creates that flame duct. The launch mount on top of it is one component of the transporter erector. It transfers loads into the pad deck during hot fire tests and, of course, at engine ramp up at launch. It also contains the release system, or hold downs, and the quick disconnect or QD carriages that provide propellant and other commodities to the vehicle when it's on the ground. Now, I do just want to take a moment to thank and give a shout out to the ground crews out here for all of their hard work. They've helped us build and operate our launch infrastructure, and they support vehicle integration and testing at one of the most historic launch sites in the United States. As you can imagine, there's a lot of work that happens at the pad to properly prepare for launch, and their work includes the design, build, and installation of launch equipment, creating and implementing the relevant procedures, integrating the vehicle, troubleshooting it, and working with our engineering teams to ensure that we optimize the vehicle and operations every step of the way. Thank you all for your amazing work. These teams have also supported our rigorous test campaigns. While this doesn't guarantee success, it certainly helps us given we're attempting so many firsts. As a reminder, we're launching the first 3D printed rocket. We're racing to have the first Methalox rocket to reach orbit, and we're hoping to be the first venture-backed space company to have successfully reached orbit on its first flight. Now let's quickly recap what we've done to get this 3D printed rocket here today. And it all started through manufacturing at our Long Beach factory. This is where we print and build our rocket. We build and print in sections of the stage for the tanks as well as the domes that get printed using the wire arc additive manufacturing. These are then integrated together, and then the stage is taken to structural testing. This structural testing is also completed at Long Beach. This structural testing includes filling the tanks with water to do a pressure-proof test and also testing with structural loads. After testing and final integration, Stage 2 was transported to NASA Stennis, where we completed a full flight duration hot fire test. After structural testing and final integration of Stage 1 hot fire testing was actually done here at Launch Complex 16. Stage 1 hotfire used a special mount to simulate loads during flight. 6 ignitions of the Aeon 1 engines resulted in 185 seconds of hotfire on all 9 of those engines. Then we integrated Stage 2 and the nose cone after hotfire testing, and now we are here for our first launch. Let's take a look at our journey to launch.
हेलो। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। कैमरा। नाउ इट इज फाइन आई थिंक। ओके 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 ओके, हियर इज ओके, हियर वी गो। ओके, वेलकम टू द चैनल। ओके, आप सभी का स्वागत है एक और चैनल में, एक और लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे हम देखेंगे रिलेटिविटी स्पेस, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है यूएसए की। तो उसका एक पहला लॉन्च है, फर्स्ट लॉन्च है, जिसका रॉकेट का नाम है टेरन 1। तो आइए चलते हैं डिटेल में, जानते हैं इस मिशन के बारे में, रॉकेट के बारे में, क्या इंटरेस्टिंग है इस रॉकेट में, क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, क्या फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, कौन लॉन्च कर रहा है, सारी डिटेल हम जानेंगे। तो सबसे पहले फिर से अगेन आप सभी का स्वागत है एक और लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे हम देखेंगे लॉन्च। अभी लगभग 26 मिनट है लॉन्च होने पे। इनका टाइम तो काफ़ी पहले था, लगभग आधा घंटे पहले लॉन्च हो जाना चाहिए, लेकिन शायद हवा तेज़ चल रही है, कुछ इन्होंने बताया 24 नॉट पर सेकेंड और पर आवर आई थिंक स्पीड हवा चल रही, तो माइट भी उसी के कारण शायद डिले कर दिया गया 10-15 मिनट आई थिंक। अभी 26 मिनट है, हमारे पास काफ़ी टाइम है बात करने के लिए कि क्या लॉन्च हो रहा है। तो इस मिशन का नाम रखा गया है GLHF। What is the full form of GLHF? The full form of GLHF is Good Luck, Have Fun. The mission name is The Good Luck, Have Fun. तो रिलेटिविटी स्पेस एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसका काम है कि रॉकेट को रॉकेट को ऑर्बिट में ले जाना। तो इसमें इन्होंने बनाया है टेरन 1 नाम का रॉकेट, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामने वाइट कलर का। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कितने इंजन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंजन यूज़ कर रहे हैं। तो इस रॉकेट का नाम है टेरन 1। टेरन 1 लॉन्च किया जा रहा है लॉन्च कॉम्प्लेक्स 16 केप कैनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन यूएसए से लॉन्च किया जा रहा है आज 8 मार्च 2023। ये रिलेटिविटी का पहला लॉन्च है, इसका नाम है टेरन 1 रॉकेट। ये अगर इसके हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है लगभग 34 मीटर, लेकिन अब स्क्रीन से हट गया है रॉकेट। जब रॉकेट आएगा तो आपको एक और इंटरेस्टिंग डिटेल बताऊंगा, आगे डिस्कस कर लेते हैं। तब तक दूसरी बात, इस रॉकेट कंपनी की सबसे, हाँ अरे चला गया, ठीक कोई बात नहीं। इस रॉकेट कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, और काफ़ी चर्चे में रही है कंपनी, क्योंकि इन्होंने पहली बार बनाया है 3D प्रिंटिंग फुल रॉकेट। मतलब 3D प्रिंटिंग, मेटल 3D प्रिंटिंग से सामान बनते थे, रॉकेट इंजन भी बनते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा रॉकेट ही बना डाला। तो ये सबसे यूनिक पॉइंट है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पूरा ऑल ओवर द रॉकेट 3D प्रिंट, मेटल 3D प्रिंट से बनाई जा रही। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाया जाएगा, इसलिए कहीं भी आप अगर लिखा हुआ देखेंगे तो 85% ऑफ द मास मेड बाय रिलेटिविटी स्पेस विद द हेल्प ऑफ मेटल 3D प्रिंटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है इसका, उसका 85% ही 3D प्रिंट करके बनाया गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और 25% क्यों रह गया, सॉरी 15% क्यों रह गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं बनेगा, तो इसलिए मतलब पूरा रॉकेट इन्होंने 3D प्रिंट करके बनाया है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक बात है इस कंपनी की। तो इसलिए काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि टेरन 1 लॉन्च होगा, और ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा, क्योंकि पहली कंपनी जो 3D प्रिंट करके ऑर्बिट में ले जा रही है। तो इसका ये पहला फ्लाइट है, देखते हैं फ्लाइट जा पाता है कि नहीं। अब बात करते हैं हाइट की, और ऊपर ऊपर जो आपको नोज़ कोन दिख रहा होगा, हाइट वैसे 34 मीटर की इन्होंने बताया टेरन 1 रॉकेट का, जो आपके सामने है, लेकिन इस बार जो लॉन्च हो रहा है वो 33 मीटर का ही है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप अगर इस रॉकेट के कोन में देखें, नोज़ कोन में काफ़ी छोटा नोज़ कोन है, इसमें तो कुछ अटेगा ही नहीं, क्योंकि रॉकेट का क्या काम होता है कि पेलोड को ऑर्बिट में ले जाना। तो पेलोड इसमें नहीं आ पाएगा तो फिर क्या मतलब हुआ। तो इसमें कोई भी पेलोड नहीं भेजा जा रहा है इस बार, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी छोटा नोज़ कोन बनाया है। लेकिन
जब ये पहला फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाएगा, जब ये कमर्शलाइज कर देंगे कि हम कोई भी पेलोड भेज सकते हैं, तो ये अपना फेयरिंग बड़ा कर लेंगे। तो इस लॉन्च में फेयरिंग बड़ा नहीं है, इसलिए छोटा सा नोस्कोन है, इसलिए 33 मीटर का ही रॉकेट इस बार लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन है टोटल में 30। ये जस्ट अ मिनट, ओके, एवरीथिंग लुक्स फाइन एवरीवन, ओके। चलो, अब आपके हम लोग आगे क्या बात कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें पेलोड में भेजा क्या जा रहा है। तो वैसे तो इसमें पेलोड में वैसे कोई ऑफिशियली पेलोड है नहीं, पर इन्होंने एक 1.5 किलो का प्लेट बनाया है जिसमें रिलेटिविटी स्पेस का लोगो भी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे घूमता हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं कि पेलोड पे क्या भेज रहे हैं ये लोग, तो जस्ट अ मिनट, ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पेलोड भेजा जा रहा है। ये एक छोटा सा, लगभग कुछ 165 सेंटीमीटर डायमीटर, या फिर हाँ शायद 1.5 किलो का, लगभग इतना ही होगा, छोटा सा पेलोड है जो भेज रहे हैं। तो भेज कहाँ रहे हैं, भेज रहे हैं सी लेवल से 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, मतलब ऑर्बिट पे। इनका ऑर्बिट है, पेरिजी होगा 200 किलोमीटर और एपोजी होगा 210 किलोमीटर। मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है जब भी हम लोग कुछ भी भेजते हैं ऑर्बिट में। तो पेरिजी मतलब पास वाला जो अर्थ के पास होगा 200 किलोमीटर, और थोड़ा दूर जो होगा वो 210 किलोमीटर के ऑर्बिट। आई थिंक ये काफ़ी, बस ऐसे ही भेज दें क्योंकि कुछ तो भेजना पड़ेगा ऐसे ही। तो मुझे नहीं लगता काफ़ी देर तक ये ऑर्बिट में रहेगा, डी ऑर्बिट हो जाएगा ऑब्वियसली। पर पता नहीं, जो भी हो, पर एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा है जिसमें ये लोगो बना हुआ है। ओके, आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या चीज़ है। हम लोग हाइट के बारे में बात कर लिए, 85 मीटर मास और 3D प्रिंटिंग के बारे में बात कर लिए। तो अब बात करते हैं कि किस मटेरियल से बना है। इन्होंने बढ़ा दिया क्या, जस्ट अ मिनट, रुकिए 2 मिनट। इन्होंने शायद बढ़ा दिया, तो वो देख लेते हैं। अनाउंसमेंट कुछ हुआ था, हम लोग सुने नहीं, कुछ तो हुआ था अनाउंसमेंट यार। हाँ ये रहा। ओहो, 1 घंटा और एक्सटेंड कर दिया, पर कोई बात नहीं, हम लोग चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल में जान लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। क्योंकि स्ट्रीमिंग होगा कि नहीं, पहले डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे अभी, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे अभी। हाँ ठीक है, किस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये इन्होंने यूज़ किया है एल्यूमिनियम अलॉय। अब अलॉय में क्या यूज़ किया होगा पता नहीं, क्योंकि प्योर एल्यूमिनियम तो यूज़ नहीं किया होगा, कुछ और भी एडिशनल यूज़ किया होगा जो इन्होंने 3D प्रिंटर के लिए बनाया होगा। क्योंकि ये कंपनी कहीं से खरीदे नहीं है अपना 3D प्रिंटर, ये खुद बनाई है एक 3D प्रिंटर ही, मतलब प्रिंटर भी खुद बनाई है और उससे जो प्रिंट करे वो तो खुद ही प्रिंट करे। तो इनका अलॉय अलग ही होगा, बस इन्होंने यही लिखा है कि एल्यूमिनियम अलॉय है, तो खैर कोई बात नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं, ओके हाँ, इस बार तो 1.5 किलो का ही भेजे जा रहे हैं ऑर्बिट में, लेकिन कैपेबिलिटी क्या है। तो इसकी कैपेबिलिटी है, इन्होंने लिखा है 185 किलोमीटर के ऑर्बिट पे, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये ले जा सकते हैं 1250 kg, मतलब अराउंड, और 1 टन के आसपास। और 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये ले जा सकते हैं 900 kg लगभग आसपास। इन्होंने फिर से कुछ अपडेट दिया, जस्ट मिनट,
अरे इतनी जल्दी क्यों भाग गए, मैंने सुना ही नहीं क्या दिया। चल Pause now, and you see the T clock is no longer paused now. We are counting down. We are at now T minus 58 minutes and 18 seconds. ओके, कोई बात नहीं, हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे। ओके, एक चीज़ और डिस्कस कर ले, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इतने सारे, इसमें क्या क्या चीज़ है। तो पहला वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है वो ऑब्वियसली रॉकेट है। और जो आपको चार पोल दिख रहे हैं, पोल मैं माउस से दिखाता हूँ, एक ये पोल, एक ये पोल, एक ये पोल, एक ब्राउन कलर के जो लंबे लंबे पोल, वो पोल क्यों है? वो पोल है क्योंकि लाइटनिंग इफेक्ट ना हो। अगर लाइटनिंग इफेक्ट हो तो रॉकेट को कोई डैमेज ना हो, क्योंकि ये सारे लाइटनिंग इसमें चले जाएंगे और ग्राउंड से फिर अलग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा रॉकेट में। क्योंकि अगर रॉकेट में गिरा तो इसमें फ्यूल भी है, ऑक्सीडाइज़र भी है। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, जो उसमें बताया था कि जलने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र। जो रॉकेट में भरपूर अच्छे से भरा हुआ है तो ब्लास्ट हो जाएगा, लॉन्च पैड भी गया, रॉकेट भी गया, सब जाएगा। इसलिए ये लाइटनिंग के लिए बचने के लिए ये है। और फिर और चार छोटे छोटे जो दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के, एक दो, अरे इन्होंने कैमरा एंगल ही बदल दिया, खैर अच्छी बात है, हमें अच्छा दिख रहा होगा। एक दो इधर है और दो इधर है, वो किस लिए चार? ये चार है वाटर डाइल्यूट सिस्टम है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट, और ये ऑब्वियस ही है कि बहुत ज़्यादा हीट निकलते और शॉक वेव भी निकलते, तो उसकी वजह से अदर चीज़ें डैमेज ना हो और खुद रॉकेट में ही वो शॉक वेव वापस ना हो जाए, बाउंस बैक ना हो जाए, इसलिए पानी डाला जाता है। क्योंकि वो पानी बहुत ही अच्छा शॉक एब्जॉर्वर है और बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन कर देता है, तो इसलिए पानी डाला जाता है। और दूसरा एंगल पे एक और चीज़ दिख रहा होगा, जो आपको आएगा तब मैं दिखाऊंगा, मतलब ये दिखाएंगे तो मैं बताऊंगा। और जो वाइट वाइट निकल रहा है वो कंडेंसेशन है, क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन। या इंटरेस्टिंग बात ये भी है, मैं भी बताना भूल गया, कि लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये पहली बार होगा कि कोई लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करके रॉकेट बनाया है जो ऑर्बिट जा रहा है। अपना स्टारशिप जो है वो भी लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन पे ही बन रहा है, जो इंजन है रैप्टर इंजन। लेकिन अभी तक ऑर्बिट अटेम्प्ट नहीं हुआ है, ये पहला रॉकेट होगा। अगर ऑर्बिट चला गया तो ये पहला रॉकेट होगा जो मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करके ऑर्बिट में गया है। तो इनके पास काफ़ी एडवांटेज है, मतलब लाइमलाइट में आने के लिए काफ़ी चीज़ें इसीलिए है, क्योंकि इन्होंने इंजन यूज़ किया अलग, 3D प्रिंटिंग यूज़ किया। और अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। होल्ड कर दिया इन्होंने, फिर से होल्ड कर दिया, कोई बात नहीं, आज ये लॉन्च नहीं होगा मुझे लग रहा है। खैर हम लोग पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अभी हम लोग बात कर लिए हैं, ठीक है, एलॉय का, कैपेबिलिटी का। अब बात कर लेते हैं, हाँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो बाद में तो फिर से चेंज कर देंगे। जो आपको जलता हुआ कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इधर पे, ये जलता हुआ क्यों है? ये जलता हुआ क्यों है? क्योंकि इसमें ऑब्वियसली अभी बात किया कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन यूज़ करें, तो वो लीक आउट होते रहते हैं, तो आसपास फैल ना जाए। तो उसके लिए जब आसपास फैल जाते हैं तो उनको पहले ही जला दो, थोड़े बहुत फैलेंगे तो जल जाएंगे। अगर एक साथ फैलते फैलते बहुत सारे होगा और एक साथ जब रॉकेट लॉन्च होगा तब फ्यूल निकलेंगे, फ्लेम निकलेगा, तो एकदम से एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए अगर कुछ कहीं पे जा रहा है तो उसको पहले हल्का जला के ख़त्म कर दो। तो ये इसलिए यहाँ पे चल रहा है। और सब रॉकेट पे भी होता है, जब आपने रॉकेट लॉन्च देखा होगा आर्टेमिस का, तो नीचे स्पार्कलिंग होता रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस लीक होती रहती है, तो वो ज़्यादा एक जगह इकट्ठा ना हो जाए फिर बम की तरह फट जाए। इसलिए पहले अगर लीक हो रहा है तो उसको जलाते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अलग अलग जगह पे रखते हैं, अब पता नहीं इतना दूर क्यों रखे, हो सकता है वहाँ तक पहुँच रहा, पर मुझे इतना नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें कितने इंजन यूज़ किए जा रहे हैं? तो फर्स्ट स्टेज में यूज़ किए जा रहे हैं, आई एम सॉरी, फर्स्ट स्टेज में यूज़ किए जा रहे हैं 9 एऑन इंजन। इंजन का नाम है एऑन इंजन। और सेकंड स्टेज में यूज़ कर रहे हैं एक आयोन, एऑन, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ आयोन? एऑन इंजन, या
AEON, एऑन इंजन। तो इस इंजन की खास बात क्या है? वही हमने जो बात किया, लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन। सिर्फ एक ये एऑन इंजन है, और दूसरा रैप्टर इंजन जो स्टारशिप में लग रहा है, और एक और इंजन है BE4 इंजन, जो Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी है, ब्लू ओरिजिन। तो उसका जो सेकंड रॉकेट है, पहला रॉकेट तो उनके पास है स्टारशिप, वो तो यूज़ करता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। लेकिन उनके पास जो अगला रॉकेट बना रहे हैं, न्यू गैलन, वो भी यूज़ करेंगे BE4 इंजन, वो यूज़ करता है लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन। एक और रॉकेट है जिसके वो, लेकिन जो न्यू गैलन रॉकेट है वो अभी तक ऑर्बिटल फ्लाइट पे गया नहीं है, मतलब लॉन्च ही नहीं हुआ एक बार, बने नहीं खैर। और जो दूसरा है एक ULA का रॉकेट है, वॉल्कन नाम है रॉकेट का, वो भी अभी ऑर्बिट पे नहीं गया, शायद जाने 1-2 महीने में चला जाए। वो भी यूज़ करता है BE4 इंजन यूज़ किया था फर्स्ट स्टेज में, 2 BE4 इंजन यूज़ किया कर रहे हैं वो लोग। तो मोटा मोटा देखा जाए तो बात यह है कि जो लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल है वो अभी तक ऑर्बिट पे गया ही नहीं, तो ये पहली बार होगा ऑर्बिट पे जाएगा। इसके बाद शायद स्टारशिप जाए, उसके बाद वॉल्कन जाएगा, फिर उसके बाद न्यू गैलन जाएगा, फिर आगे अगर कुछ आता है तो वो जाएगा। तो ये थी पूरी पूरी अपडेट। और अगर बात करें तो एक इयॉन इंजन कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, तो एक इयॉन इंजन 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा वो वाला, जिसमें मैंने बात किया कि थ्रस्ट क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक इंजन अगर 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो किलो न्यूटन का मतलब हो गया 3 जीरो, और फर्स्ट स्टेज में 9 इंजन लगे हुए हैं, तो एक इंजन प्रोड्यूस कर रहा है 100 किलो न्यूटन, तो 9 पड़ेंगे 9 किलो न्यूटन। 9 इंटू क्या है, 100 इंटू 9, 100 इंटू 9, 900 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये रॉकेट, तो काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट है। कंपैरिजन के लिए बात करें, जो इलेक्ट्रॉन रॉकेट है रॉकेट लैब का, वो एक इंजन प्रोड्यूस करता है 25 किलो न्यूटन, तो इस उससे तो ज़्यादा है। तो ठीक है, मतलब उससे बड़ा रॉकेट है, लेकिन अपने फैल्कन 9 से छोटा है, GSLV PSLV से तो काफ़ी छोटा है। खैर कोई बात नहीं। तो ये थी पूरी अपडेट अपने रिलेटिविटी स्पेस के टेरन 1 रॉकेट के बारे में। आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि ये लोग रॉकेट आज लॉन्च करेंगे क्योंकि काफ़ी देर से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और ये डिले पे डिले। खैर कोई बात नहीं, डिले हो जाता है, अच्छी बात है। रॉकेट को बूम करने से अच्छा है कि डिले कर दो, है ना। कोई भी करेगा ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करना भी चाहिए। गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम भी है इसका, गुड लक हैव फन। द मिशन नेम इज द गुड लक हैव फन। कोई बात नहीं। ओके For those just joining us, we are at T minus 49 minutes. As a reminder, we set back the T clock to allow us more time for propellant conditioning. In the ओके meantime, why don't we talk about stage 2 MGC? Great idea. One of the approaches we take here at Relativity is to be focused on having a lot of hardware that we can test in order to reduce our risk getting into flight. One attempt that we tried to do that was paved out through successful testing was stage 2 hot fire testing. This is where we took stage 2 to NASA Stennis and we integrated the Aeon vacuum engine with a stub nozzle. For this test, we filled the tanks with our cryogenic propellant, and this is also where we were able to fire the engine and see interactions between the engine as well as the stage. What's really important about this type of testing is that it allows us to reduce risk. It allows us to test our propellant estimation algorithms. It also allows us to test how we pressurize our tanks. We got so much learnings from these tests, and why don't we take a look at that journey to stage 2 hot fire testing? My name is Zach Rubin. I'm the second stage RE. We're here, we have the flight engine on the flight stage, and we are going to do a full mission simulation starting with terminal count through stage 1 burn and stage 2 burn. Obviously, stage 2 burn is going to be the main event, and if it all goes well, we'll accept it for flight. 5, 4,
2, 1, 0. This was the first attempt at our actual mission duty for the flight vehicle. It was the first attempt. We went full duration on the first try. It was really cool to see all the teams finally come together. Avionics, flight software, ground software, prop, fluids, stage and ground systems. Really cool to be a part of. Okay, not a problem. Now we are going to end this stream because ये काफ़ी लंबा खींचा जा रहा है और आगे हम लोग जो भी अपडेट होगा मैं नीचे कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू एंड दिस स्ट्रीम बिकॉज इट्स टेक टू मच launches and I have to go that's why I'm going to end this stream। अगर आपने पूरा वीडियो देखा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, गेम प्ले के साथ और रॉकेट लॉन्च के साथ। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।